श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आगमारुतं तु देवानां गमनार्थं सुरक्षसां पूर्वे दन्तारवन्तत्तद्देललाह्वानलाञ्चलं कण्ठस्थिताय गरुडाय नमः। ॐ शुभं करोति कल्याणम् आयु आरोग्य सम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपमहादेव्यै नमो नमः। ध्यायामि आवाहयामि। दीपदेव्यै नमो नमः। संकल्पः। ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्राणानायं य। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं तरेव लग्नं श्रीणं तरेव ताराबलं चन्द्रबलं तरेव विद्याबलं दैवबलं तरेव लक्ष्मीपते गौरीपते तें गृह्यं स्मरामि। शुभे शोभने मुहूर्ते आभ्यवन्मनः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे सप्तमे वैवसत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिपदं चरणे भूलोकान्तर्गत उत्तरअमेरिकाखण्डे केनडादेशे जाक्सगरे सङ्कटमोचन श्री हनुमान मंदिरे शुभे दिन शोभने मुहूर्ते लोका समस्ताः क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय आयु आरोग्य ऐश्वर्याणां विद्यर्थं समस्त मंगलावाप्त्यर्थं समस्त दुरितोपशान्त्यर्थं चिन्तित मनोरथवाप्त्यर्थं सर्वाभिसिद्ध्यर्थं सर्वारिष्टशान्त्यर्थं श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थं श्री हनुमत प्रीत्यर्थं लक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं उमा महेश्वर प्रीत्यर्थं
अद्य महागणपतिपूजनं वरदित्यादिदेवतापूजनं श्री आदित्यादि नवग्रह देवता प्रार्थना श्री हनुमद्बिम्बाभिषेक आराधना हम करिष्ये इति संकल्प्य अपूपस्पृश्य ओं गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्चन्वन्नोतभिः सीदसादनं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि आवाहयामि आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि पार्योपाध्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शरीरे स्नानं समर्पयामि। ॐ भद्रं कर्णेभिश्शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः व्यशेम देवहितैर्यधायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कुङ्कुमं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि अर्चना। ओं सुमुखाय नमः ओं एकदन्ताय नमः ओं कपिलाय नमः ओं वज्रकर्णकाय नमः ओं लम्बोदराय नमः ओं विकटाय नमः ओं विनायकाय नमः ओं धूम्रकेतवे नमः ओं गणाध्यक्षाय नमः ओं भालचन्द्राय नमः ओं गजाननाय नमः ओं वक्रतुण्डाय नमः ओं हेरम्भाय नमः ओं स्कन्दपूर्वजाय नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पी समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपवानैवेद्यम्। ॐ सोर्भूतो गन्धाध्यो गन्धोत्तमाग्रासर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपमाघ्रापयामि आचमनीयं समर्पयामि। दीपं साचं सुदृढं वहिनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यपरापः दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि। दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि सर्वरक्षान् धारयामि। नैवेद्यम् ओम इदं फलं मया देवस्तावनं वरदस्वादेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि महानैवेद्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शरीरे ओम समर्पयामि। ओम ताम्बूलानि च समर्पयामि अत नीराञ्जनम्। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो रन्धः प्रचोदयात्। महागणाधिपतये नमः। कर्पूरीनाथं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि सर्वरक्षान् धारयामि। अत प्रार्थना वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो रन्धः प्रचोदयात्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए गणेश भगवान की जय। ओम धनुद्राय विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो दरा प्रचोदयात्। कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्सरतो ब्रह्मा मध्ये मातगणास्पदः कूचतुषा करा सर्वे सप्तधीवा वसुन्धरा। ऋग्वेदो तैजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वणः आङ्गे सहिता सर्वे कलन्तु समाश्रितः आयान्तरपूजार्थं त्रिक्षयकारकाः। रङ्गे चौमने चैव घोराविरसरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरी जले सन्निधिं कुरु। इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदते परं समूढवस्य पाकं सुरे पूर्णादर्विपरापदसु पूर्णात् पुनरापदवस्मेव विकर्णावहैखमूर्जगु शतक्रतो। ओम नमो मकरवाहाय पाजहस्ताय ते नमः। नमः प्रचेतसे तुभ्यं वरुणाय नमो नमः। वरुणाय नमः। ध्यायामि आवाहयामि पार्योपाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शरीरे स्नानं समर्पयामि। ओम
यश्चन्नसामशुभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारिणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविष्णुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि उपरि अक्षतान् समर्पयामि ॐ अदर्चना ॐ वंवरुणाय नमः ॐ रजेतसे नमः ॐ स्वरूपिणे नमः ॐ वामपदये नमः ॐ तीर्थराजाय नमः ॐ हेमभूषणाय नमः ॐ अग्रवाहनाय नमः ॐ जलादिवाय नमः ॐ भाजहस्ताय नमः ॐ ऋग्वेदाय नमः ॐ यजुर्वेदाय नमः ॐ सामवेदाय नमः ॐ अथर्वणवेदाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ब्राह्मणोऽस्मकमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरुतरस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत धूपमाघ्रापयामि आचमनीयं समर्पयामि दीपं चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यः जायत मगारन्दृष्टाग्निष्टप्राणाद्वायुर्जायत दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि सर्वरक्षान् धारयामि नैवेद्यम् नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णोऽध्यो समन्तराभ्यां भूमिर्दिशश्रोत्राद तथा लोकागं मगलवयन्नमः नैवेद्यं समर्पयामि कर्पूरताम्बूलानि च समर्पयामि श्रीवरुणाय नमो नमः नीलाञ्जनम् ॐ जम्बकाय विद्महे पाचहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमो नमः कर्पूरीनां दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि सर्वरक्षान् धारयामि अत प्रार्थना ॐ नमो मकरवाहाय पाचहस्ताय ते नमः नमः प्रजेतसे तुभ्यं वरुणाय नमो नमः ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सीतालक्ष्मण भरतशत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचन्द्राय नमः ध्यायामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हनुमते नमः ध्यायामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि नमः सूर्याय सोमाय मंगलाय बुद्धाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राघवे केतवे नमः आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि च पापानि चरमान्तर्कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे प्रकृष्टपापनाशाय फलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि शम्प्रसीद परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष हनुमत् श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत रामचंद्राय नमः हनुमते नमः अनंत कोटि प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि बोलिए रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय
पटले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। ओम यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री हनुमते नमः। ध्यायामि आवाहयामि रामदूताय नमो नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं च समर्पयामि शरीरे स्नानं समर्पयामि। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। सकल आराधनैः सुवर्षितं पंचामृत स्थानम् ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उदावृतत्वशेषानः यदन्येनाधिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागिश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि प्रपादस्यामृतं दिवि प्रपादोर्धौ पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् साधनः तस्मात् विराजजायत विराजो अधिपूरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यः पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदन्वता सीराजं भीष्मयुग्मशरद्दवे सप्तास्यासन् परितयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञन्तन्वानाः अवद्गन् पुरुषं वशं तयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षण्य पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्ता साध्यार्षयश्चे तस्मात् विज्ञात् सर्वभूतः संभृतं वृषराजं वृषोगिश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्चे तस्मात् विज्ञात् सर्वभूतः वृक्षसामानि जज्ञिरे छन्दागं जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके शोभयारत गावो जज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यरदुः प्रतिभा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य को बाहु कावोरुपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरुतनस्य यद्वैश्यः पद्यागं शूरो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोभ्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिश्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवरण्यरास्ते धाता पुरस्ताजमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सृजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ नमो नारायणाय अभ्यः सम्भूत पृथिवेरसा च
विश्वकर्मणः समवर्ततादि तस्य तुष्टा विततद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाज्ञानमग्रे वेदाहमीतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यपन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां परिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मणे ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रेतरब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवाः संवशे रीशते लक्ष्मी च वत्योः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टं मणिषाणः अमं मणिषाणः सर्वं मणिषाणः सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भवं विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं परं विश्वतः परमानित्यं विश्वनारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वोपजीवति पतिं विश्वस्यात्मीश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरो ब्रह्मतत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेन्दं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निस्यामितस्यां तेनाभ्यां वनिष्यति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततकं शलाभिस्वलम्बस्य घोषसन्निभं तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये वह्निशिखा अनीयोर्द्वादधस्थिता नीयतो यगमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशुकवत्तन्वी पीताभा आस्वज्यरूपमा तस्या आशिखाया मध्ये परमा आत्मा व्यवस्थिता स ब्रह्म स शिव स हरिसेन्द्र सोऽक्षरपरमस्वराट् ऋतकं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं स्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विश्वप्रचोदयात् विष्णोर्नुगं वीर्याणि प्रबोधय्य पार्थिवानि विममे रजागं सियो अस्कभायदुत्तरगं सदस्तं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णोरराडमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णो श्नप्त्रे स्थो विष्णोस्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैश्रवमसि विष्णवे स्वाहा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमो नमः श्री हनुमते नमः ओम श्री गणेशाय नमः हनुमान चालीसा गाएंगे ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि
हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंधन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करि बेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावै, अस कई श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कई सकहि कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, चल दिलांघि गय अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमयन ग्रह तुम्हारे देते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लह तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे।
सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है परसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असुवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महरेरा। की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। आंचनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। श्री हनुमानष्टकं। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानते हैं हनुमान जी? सब जानते हैं, पूरा संसार जानते हैं। श्री हनुमते नमः। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह, संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम
तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। आली की त्रास कपीस बसै, गिरिजात महाप्रभु पंथ निहारो। चौके महामुनि साप दियो तब, चौहिय कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लेवाय महा, प्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिंह को, सब राक्षसी शोक ही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, छय चरी चरनी चर मारो। चाहत सिय अशोक सुआरे, सुर प्रभु मुद्रिका सुख निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। मान लग्यो पुर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल, मान लग्यो पुर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लय ग्रह वैर्य सुषेण समेत तब, गिरिद्रोण सुबीर उपारो। आन संजीवन हाथ धई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल, वह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तब हनुमान, जुबंधन काटी सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवी पूजी बलि विधि सो बलि, देहु सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। आज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब पूछो, तुम सो नहीं जात है टारो। देगी हरो हनुमान महा, प्रभु जो कछु संकट होय हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम
तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम दूत कृपा सिंधो, मत्कार्यं साधय प्रभो, श्री वीर हनुमते नमो नमः। आञ्चनानन्दरं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। हम सब गाएंगे श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करी राखे रामो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। महावीर बिनवो हनुमाना, महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कहई रीछपति सुनो हनुमाना, कहई रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे वो बलवाना, का चुप साधी रहे वो
बलवाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। पवन सुकाजु कठिन जग माही, पवन सुकाजु कठिन जग माही, जो नहीं तात होई तुम पाही, जो नहीं तात होई तुम पाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। सिंहनाद कर बारही बारा, सिंहनाद कर बारही बारा, लीलहि लांघहु जल निधि खारा, लीलहि लांघहु जल निधि खारा। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी, आनव इहा त्रिकूट उपारी, आनव इहा त्रिकूट उपारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत मैं पूछहु तो ही, जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोहि, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। श्री वीर हनुमते नमः। आंचनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं
वन्दे लङ्का अभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवनिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॐ रामदूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो ॐ अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहं दनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्राय नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। ॐ बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। श्रीवीर हनुमते नमः। ॐ श्रीरामदूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। वीर हनुमते नमो नमः। आञ्जनेयाय नमो नमः। वायुपुत्राय नमो नमः। खड़े हो जाइए सब तो। ओम राम 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 सीताराम। श्री राम 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 राजा राम।
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रसाद प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद को प्रसाद करते। श्री हनुमते नमो नमः। श्री राम जय राम। श्री राम प्रसाद। श्री हनुमते नमो नमः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। वीरवीराय नमो नमः। रामदूताय नमो नमः। आञ्जनेयाय नमो नमः। महाबलपराक्रमाय नमो नमः। लङ्काविध्वंसिने नमः। वीरवीराय नमो नमः। श्रीरामदूताय नमो नमः। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीहनुमते नमो नमः। सकलाराधनैः सुवर्चितं वीरवीराय नमो नमः। महाबलाय नमो नमः। जा रहे हैं जी, आइए जी। प्रसाद प्रसाद लीजिए, प्रसाद लीजिए। ओम हरि ओम। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम श्री हनुमते नमो नमः। श्री राम जय जय राम। 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 राम जय जय राम। श्री राम जय राम
Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, 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 Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Sita Lakshmana Bharata Shatrughna Hanumat Samet Ramachandraya Namaha. So last week we concluded our discussion from Kishkindha Khan, where Sri Ram felt somewhat disappointed. Disappointed with Sugriva. Sugriva's action made Bhagavan Sri Ram sad. Why? Because Sri Ram did everything within his power to help Sugriva to regain his kingdom. Sugriva regained his kingdom, his treasury, the name and fame and the city, everything that goes with the throne, and he became immersed in sensual pleasures. Now when we look at this action of Sugriva, this is how samsari behave. Worldly people like you and I. We make a commitment, we say we'll do something, we promise to offer a helping hand, and we barter like Sugriva. Sugriva barter with Bhagavan. Bhagavan, if you help me to regain my lost kingdom, I will help you, and I'll send out all the Vanars when I become the king of Kishkindha to find Janaki Ma. That was his commitment to Bhagavan Sri Ram. So having gained everything, regained everything, he forgot his word. Sri Ram was disappointed. Why did Sugriva behave in this way? Now, when we get carried away with material things, sometimes Bhagavan sends someone, and this person may come not as a friend, this person may come as an enemy or as someone just to keep us on our toes so that we may pause for a moment and think, what are we really doing? So, there's always someone who likes to keep us on our toes sometimes. We look at those people as our enemy, but we should not look at it that way. We should look at those people as our friend. They come, Bhagavan sends them in our lives so that we can focus on the most important goal in life. So Sri Ram decided to make Sugriva think about his commitment. Tulsidasi writes in Doha number 18 of Kishkindha Khan. Tab anujahi samujhawa, tab anujahi samujhawa, Raghupati karunasi, Raghupati karunasi, bhaya dekhawai le avahu, bhaya dekhawai le avahu, tat sakha sugriv, tat sakha sugriv siyavar Ramchandra ki jai sharanam. Tab anujahi samjhava. Bhagwan Sri Ram explained the circumstances to his brother Lakshmanji, who was there, knew exactly how Sugriva did not live up to the expectation. Raghupati karunasi. Prabhu Sri Ram is like a boundless ocean of grace. Kripa Sindhu. So dayalu, compassionate. Bhaya dekhavai lay avahu. Go Lakshmanji. Just go and do not hurt him. Just go and threaten him a little bit. Bhaya dekhava. Threaten him a little bit.
So Lakshmanji was given this responsibility to go to Kishkinda, just threaten him a little bit. Why? Tatha Sukha Sugriv. Lakshmanji, Sugriva is our hamare mitra hai, hamare sakha. Don't hurt him. Just threaten him a little bit. You know, Lakshmanji, we all know it doesn't take much for Lakshmanji to get angry. We look at the Ramayana, the original Ramayana, Raman and Sagar. And I'm sure you'll agree with me, that is the best version of Ramayana. They have many other versions, beautiful one. But that's for those who are old like me, that is the original one. So Lakshmanji was all prepared to go, and he was preparing to go and teach Sugriva an important lesson. Tulsidaji writes in the Chaupai, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama. गाइए हम सब गाएंगे श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। इहा पवन सुत हृदय विचारा, राम काजु सुग्रीव विसारा। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय रामा। निकट जाई चरणन सिरुनावा, निकट जाई चरणन सिरुनावा। चारि हो विधि तेहि कहि समुझावा, चारि हो विधि तेहि कहि समुझावा। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। So while Lakshmanji was preparing to go and to threaten Sugriva, it's always good to have a dependable and a good friend. It's always good to have a good friend who has your interests at heart. Hanumanji was one of the ministers in the government before Sugriva was exiled. He's always a good friend and an advisor to Sugriva. Hanumanji recognized that Sugriva was not living up to the expectation. So this Paramitra, this great friend Hanumanji, Iha Pavana Sutta Hridaya Bichara. Hanumanji thought to himself, it is my responsibility to go and to remind Sugriva of his responsibility. Rama Kaju Sugriva Visara. He forgot his responsibility, his word. I told you last week, we come from a tradition, all Sanatanis, Raghukula Rita Sada Chaliyai. If you give your word, you can't go back on it. You promise someone to help, you cannot go back on your word. Nikat jai charanan sirunava. Hanumanji came and he did pranam. Sugriva was the king, so he showed respect to Raja Sugriva. Chari hu vidhi tehi kahi samujhava. And Hanumanji admonished him, and Hanumanji employed the 4 modes of persuasion. In Upanishads, in Mahabharata, in Ramayana, there are 4 ways of persuading someone. If you want someone to do something, to persuade someone, there are 4 things you should do. The first one is Sama. You should convince the person through argument and opposition to do the right thing at the right time. So Hanumanji must have convinced Sugriva that as a friend and an ally of Sri Ram, you have a moral obligation to help Prabhu Sri Ram. You made a commitment, you give your word. Oh Sugrivji, you have to keep your word. So Hanumanji went there and persuaded him through argument and opposition. You must do it, Raja Sugriva. So that's Sam. The next one is Dan. You induce a person in the shape of gifts. Hanumanji must have also told Sugriva that you owe everything you have here. You have regained your kingdom as a result of Sri Ram's help and Sri Ram's blessings. So you owe everything that you have here
you receive as a gift from Prabhu Sri Ram, you have a moral obligation to go and keep your word, to help Sri Ram. Then the third thing you should imply is bhed. Sow the seed of dissension. Hanumanji must have looked at him and said, you know what? If Prabhu Sri Ram wants, he can influence Angada, the son of Bali, who is the crown prince, to go against you and overthrow you, and Sri Ram can put him as the king. So that is bhed. And the last one is danda. Danda, of course, means force. Hanumanji must have said to him that Sri Ram, the same arrow that he used to destroy your brother Bali, he can use the same arrow and destroy in an instant. So this is how Hanumanji went and persuaded him. And there are many examples in Mahabharata and Ramayana where Sama, Dama, Veda, Danda, these four means of persuasion are used to convince someone. So first we start, you have to go chronologically. You start with Sam. Try to convince the person with your words. Then if that does not work, you try to bribe them. If that does not work, eventually sow the seed of dissension. And eventually then the person, in certain situation, force must be used. Especially when you are representing dharma, you're fighting for dharma, is the last resort. Because for us Hindus, ahimsa paramo dharma. But Prabhu Sri Ram had to use violence to destroy Ravan. That's the last resort. So you try all of these three things and the last one. If it doesn't work, then you have to use force. So Hanumanji went and convinced him. Now Sugriva became very afraid. He was a timid person. Remember earlier in Kishkinda Khan, when he saw from a distance these two strangers, Valmiki ji wrote like he was soaked in a blanket of fuel, ready, like if you have a piece of cloth soaked in fuel and someone has a match, you're so afraid of the person with the match. In a similar way, Sugriva was very afraid when he saw these people coming. He thought they were there to kill him. So it didn't take much for Sugriva to entertain fear and doubt in his mind. Hanumanji went, convinced him. Tulsidas, he writes in the other Chaupai. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama. Suni Sugriv Param Bhaya Mana. Suni Sugriv Param Bhaya Mana. Vishaya Mor Hari Leen Hai Jnana. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama. Ab Marut Sut Dut Samuha. Patavahu Jahatah Banar Juha. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama. Suni Sugriva Parama Bhayamana, having heard the words of Hanumanji, became very afraid. Vishaya Mora Harilin Hai Maya. And he said that I have become grossly involved in sensual pleasures. Sensual pleasures have robbed me of my of my right thinking. So I forgot my word to Sri Ram. And when we look at these words, sometimes conveniently we blame Maya, we blame other. When we do something unethical, we don't want to accept the responsibility sometimes. We always try to push it off to someone else. Oh, this person made me did it. So Sugriva in a similar way, because of Maya, I have become grossly involved in all of these sensual things and I forgot my word to Sri Ram.
Again, this is how we behave like humans. You know, everything you see has an influence on the mind. Everything we touch and interact with has an influence on the mind. Everything we hear has an influence on the mind. Everything we eat. So we use these five senses like five windows to interact with this universe. And the things that we see, hear, and we touch, taste, and smell, they have an impression on the mind. So what we advise by the saints and sages, try not to be influenced by the thing that we see, we hear, the thing that we taste. Use these senses in such a way to live a comfortable life, but do not be so much dependent on them. So Sugriva, in the Ramayana we told in Valmiki, he started to consume alcohol when he gained his kingdom. He started to enjoy all the sensual pleasures of the kingdom and he forgot his word. So Lakshmanji and Hanumanji came as two friends in his life to remind him of his duty. Abhamaruta Sutta Duta Samuha. Then he regained he came out of his silly thinking and he said, now, O Hanumanji, I must send all the Vanars in different direction to go and find the whereabouts of Sita Devi. Because earlier he made a commitment that when he regained his kingdom, he would do everything within his power to help to regain Sita Devi for Prabhu Shri Ram. We'll sing one more chaupai and conclude. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama 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 Kahe hu Pakh Mahu Avan Joy Kahe Pakh Mahu Avan Joy More Karta Kar Badhu Hoy Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama Tab Hanumant Bolaye Dutar Tab Hanumant Bolaye Dutar Sab Kar Kari Sanman Bahuta Shri Ram Jai Jai Rama Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama Kahu Pakh Mahu Avana Joy. Sugriva said to the Vanars as they came, his instructions were, you have one Paksha Pak, 15 days, to find Sita Devi. If within 15 days you do not have any news of her and you come back here, I'll kill you. Those were the instructions. You have 15 days to go and search for Janaki Devi. Taba Hanumanta Bolaye Duta Sabakara Kari Sanaman Bahuta. Hanumanji called all the Vanars together and paid respect to them. Now Hanumanji will give them special instructions. So when we look at these chaupais, we see Sugriv as a person, although he was blessed with the darshan of Sri Ram, although was in the presence of Hanumanji, but still he couldn't control his mind. He was a timid person. He was influenced by the pleasures of the kingdom. And on this spiritual path, you know, this spiritual world moves at the same speed. Remember this. But this samsara, this Maya moves at a very fast rate. We can't, like Sugriva, keep one foot on the spiritual world and one foot in the material world. They move at different speed. You won't get your balance. So I think we have to choose. Do we want to follow this path of dharma or do we want to become a samsari? The ball is in our court, so to speak. Some of us will say, you know, Panditji, I want to enjoy this world a little bit. Then I'll renounce everything. But this Maya is so powerful. The moment you get engulfed in this Maya, attached to this Maya, it's hard. It's like a huge serpent wrapping you so tight that you can't
you can't release yourself from the grip of the serpent of Maya. So this is what happened to Sugriva. 1/4 was in the spiritual world, 1 was in the material world. He gave his word, he went back on his word. But then eventually, as next week these Chaupas will reveal, Lakshman went there. And he was so angry. Lakshmanji was told to go and just threaten him. Don't hurt him. Because he's our friend. So we try, follow, and we learn from the life of Sugriva what we should not do. You give your word, try your best to keep your word. You promise to help someone, all of us together, we make a commitment to help someone, keep your word. Don't go back on your word. बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय. We'll sing to Sri Hanumanji and we'll meditate for a few moments. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Gaiye Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Pavan tan bal pavan samana, pavan tan bal pavan samana, buddhi vivek vigyan nidhana, buddhi vivek vigyan nidhana. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. We'll sit in a comfortable position, please. We'll do one pranayam and then we'll meditate for a few moments. After pranayam, just like how Hanumanji ripped his chest apart and showed the world that Sri Ram lives within him. Sri Ram हमारे हृदय में निवास करते हैं. Bhagwan lives in our heart. And when we say the heart is a point of reference only, my friends, because the heart is the seat of emotion, the heart is the seat of love. So we envisage Bhagwan present in our hearts. Bhagwan knows what's going on in your life. The difference between meditation and prayer is that in prayer हम लोग मांगते हैं, प्रभु मुझे ये दो, give me this, give me that, give me that. Meditation, you just sit quietly and you observe. There's a big difference. Bhagwan has been too compassionate and kind to all of us. He has blessed all of us with, we have some material wealth. We have a roof over our heads. By His kripa, we have more than enough to eat. So when we sit for meditation, let us be thankful for what we have. There are so many people in this world who do not have a fraction of what you have. So please be thankful of what you have. Express your gratitude, please. Because it is all Prabhu's kripa. It is all His blessings. So we try to meditate and be thankful. Quietly, we all meditate for a few moments.
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। Supposing one day you sit in your puja room or in the mandir and you're meditating on Bhagavan, and Bhagavan speaks to you and said, "Aapko kya chahiye beta? What do you want, my child? What will you ask for? Kya mangegi? What will you ask for?" Some of us will ask, "Prabhu, mujhe dhan chahiye." And no answer to this question is wrong, because they're different. Bhaktas are a different level of spirituality. Some of us will ask for wealth. We need wealth. Koi baat nahi, Prabhu denge. Some of us will ask for peace. Shanti, mujhe shanti chahiye. Bhagavan will give. But please remember, when you look at life closely and carefully, we're all seeking detachment. You may feel that you want this and you want that, but really, another meaning for the word moksha is to be detached, right? So we're all seeking detachment. Unknowingly, we're seeking it. Because all these material things are important. Please ask for some material wealth. Whatever you want, please ask. But we know that these material things will only elude us. They can't really give us lasting happiness. So what will the bhakta will ask for? Prabhu, I want to become one with you. I want to become one with you. So we have to prepare ourselves, because one of these days in Sagun Upasana, Bhagwan hamare sakshat prakat honge. Through meditation, through our love, Bhagwan will appear before us. So what will you ask for? Again, there is no wrong answer to this question. At the end of it, we are seeking freedom. Freedom. Because everything we acquire, every material thing we get, everything binds us. Arjuna, Malik Sahib ko prasad lijye, Pandit ji prasad lijye. So everything, every material thing we get, everything binds us. Everything binds us. Everything binds us. That's why we're bound in this world of becoming. We have to come in this world again. So the bhakta will ask, Prabhu, I don't want anything else. I only want to become one with you. Boliye Ramachandra Bhagwan ki jai, Pavan Sutta Hanuman ki jai. Aarti karenge. Aaiye please. Please come everyone. We'll do aarti together. राम भक्ताय विद्महे कपि श्रेष्ठाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्. In Dubai, घंटी बजाइए please. घंटी. प्रकृष्ट पापनाशाय प्रकृष्ट फल सिद्धये प्रदक्षिणं करोमीशं प्रसीद परमेश्वर. आरती की जय हनुमान लला की. 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 दुष्ट दलन रघुनाथ कला की. आरती की जय हनुमान लला की.
आरती की जय हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय हनुमान लला की। आरती की जय हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुधिलाए। लंका सकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। आरती की जय हनुमान लला की। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की। आरती की जय हनुमान लला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सखारे, आनि संजीवन प्राण दुआरे। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहने भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की। आरती की जय हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की। आरती की जय हनुमान लला की। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। 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 सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान। सीताराम राम राम हनुमान हनुमान। सीताराम राम राम हनुमान हनुमान। कृपा करके हाथ जोड़िए। Everyone kindly clasp your hands. अंतिम प्रार्थना। ओम त्वमेव मातः च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणौ त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षगौ शान्तिः पृथिवी शान्तिः
आपः शान्ति औषधय शान्तिर्वनस्पतय शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जगदम्बे मैया की जय। हर हर नमः पार्वती पतये।